Today, children, we will study about the force on a charged particle when it is placed on a magnetic field. Right? You all know that there are two types of the charges, positive and negative. ठीक है? Positive charges किस किस से बनेगा? हाँ, अगर हमारे पास अल्फा पार्टिकल्स हैं, प्रोटॉन्स का स्ट्रीम है, हाँ, तो इन सब से पॉजिटिव चार्जेस होती है ना? And if you have got the negative charges, of course, it is stream of electrons. And when I place this charge particle in an external magnetic field, what will happen? Yeah, yeah, you know, right? You got it right. It will experience a force. Yeah. In today's class, we will learn how much is the force and which direction the force will act. What are the conditions the force will act? Maximum. What will be the conditions that the force is not acting at all? All this we will be studying in today's small class. Okay, chalo. So I share my screen here. So we have got a charged particle. And in this charged particle, I take this as Q, and Q is the charged particle you have got, and it is placed now in an external magnetic field. I'm saying that this is the external magnetic field. I'm keeping this as the uniform magnetic field. I'm representing it as the magnetic field B. Now, this charged particle is having a magnitude of Q, and it is also having a speed of V, and it is entering this magnetic field, making an angle of theta with the magnetic field. Now this is going to experience a force. लगेगा इस पे force. तो कितना? ठीक है? तो experiment से ये पाया गया है, we got it from the experiments that the force which is acting on this charged particle is directly proportional to the magnitude of the charge. मतलब जितनी चार्ज की वैल्यू होगी उस पर डिपेंड करेगी. एंड सेकेंडली इट इज आल्सो गोइंग टू डिपेंड अपॉन द velocity of the particle. Matlab, it will enter with the velocity v. So what is the velocity? It will depend on that, right? And the next is, it is also going to depend upon the sign of angle theta. That is the angle between किस के बीच में? It is between the velocity vector and the magnetic field vector. And दोनों के बीच का जो angle है theta is the angle between the magnetic field and the velocity. See, it is the angle between the two vector quantities. कौन-कौन है इसमें vector quantity? Magnetic field is a vector quantity and the velocity is also a vector quantity. The angle between these two vector quantity, and that we take it the sign value. So if I combine all this, we will get that the force which is taken as F, and that is proportional to Q, V, B multiplied by sine theta. And if I take the SI unit systems, if the units I'm taking is SI unit systems, or maybe CGS also it is valid. So F is equal to Q, V, B sine theta. So what are the factors on which this force is depending? This force is depending upon, the first is the charge. It is depending upon the charge. The secondly, it is depending upon the velocity's magnitude. The third is that it is depending upon the magnetic field, the external magnetic field in which it is kept. And the other factor is the angle theta. That is the angle between the magnetic field and the velocity vector. This is the factor on which it depends. Okay. Now, if it is a force, it should have a direction, because force, I know it is a vector quantity, and any vector quantity will have a direction, right? How do I find out the direction of this particular force? So for this, there is a rule. And this is called as the right hand rule. Suppose if you take your right hand, this is the right hand, right? So you take the charge, whatever is the direction of the charge moving.
The charge is moving. So the charge is moving, so I'll represent it by my thumb. And the magnetic field will be represented by all the fingers. And what will be the direction of the force? This will be the direction of force that is moving this way. Right? If the charge is moving in this way, the magnetic field is in the direction of the fingers, the force will be given by the direction in which my palm is pointing. जिस तरफ मेरी हथेली खुली होगी ना, उसी डायरेक्शन पे मेरा फोर्स भी एक्ट करेगा. Clear? Okay. So now you know the direction also. Right. Now let us talk about the characteristics. Before I teach about the characteristics, let me tell you what are the factors on which this force depends. Let us look at this more qualitatively. F जो बोला गया है, it depends upon charge. That means the particle which is entering out here, it should be either the positive charge or negative charge. If there is no charge, there will be no force. हाँ, और इसके पहले एक और चीज बतानी है ना, किसने निकाला इसको? लॉरेंस नाम के एक साइंटिस्ट ने निकाला. ठीक है, तो इन्होंने मेजर किया होगा और इसी की बेसिस पे इन्होंने सारा लॉज बना दिया. तो इन्होंने पाया कि चार्ज होना चाहिए, दूसरा चलता हुआ होना चाहिए, it should have some velocity, and the third is it should make some angle other than 0 or 180 with the magnetic field. Why? Sine 0, 0, sine 180, that is also equal to 0. Right? So these are the factors on which this Lorentz force or force on the charged particle depend. Okay. Now, let me ask you a few questions, right? Now, will the charge, if it is at rest, will experience this force or not? No, it will not experience any force. Why? Because in this formula, if you see and put F is equal to Q into 0 into B into sine theta. See, anything multiplied by 0 is 0. So if a particle is at rest, so it will experience no force whatsoever it may be. Right? Now, if you have got a charged particle and this charged particle is moving, now it is having the velocity. Now, if it moves in a direction opposite to that of the magnetic field. See, I have got the magnetic field in this direction as per the diagram. And the particle is moving in a direction which is opposite to that of the field. This is the direction of velocity and this is the charged particle you have and which is moving in a direction which is opposite to that of the magnetic field. In that case, what is the angle? Theta is equal to 180 and we know sine 180 is also equal to 0. अच्छा नहीं पता था इसको 10th में नहीं पढ़े हम लोग, कोई बात नहीं, अब जान लो. हाँ, साइन 180 कितना होता है? 0 होता है. सो अगर वो ऑपोजिट में जाएगा या उसी डायरेक्शन पे जाएगा, हाँ, थीटा अगर 0 डिग्रीज भी होगा तो भी कितना होता है? साइन 0 0 होता है ना, तो भी कोई फोर्स नहीं लगेगा. ठीक है, तो force is perpendicular to velocity and magnetic field. जो force लगेगा ना, whatever the force is, this force is perpendicular to the magnetic field as well as the velocity. What did I say about the rule of the direction? See, the thumb is representing the direction of the charge movement, right? And this is making whatever the angle, this is showing the magnetic field's direction, and you have got the force on the particle just perpendicular to each other. So this particular force direction, it is perpendicular to the magnetic field, it is making an angle of 90 degrees with the magnetic field, and it is also making an angle of 90 degrees with the direction of the positive charge. ठीक है, अब बात आती है कि ये चीज जो है हमने जो बना तो ली है, इसको यूज कहां कहां पर होगा? ये जो फैक्ट है, साइंटिफिक फैक्ट हमने जो देखा है, ये जो साइंटिफिक फैक्ट को हम कहीं ना कहीं तो यूज करेंगे, है ना? पार्टिकल एक्सेलरेटर्स, पार्टिकल एक्सेलरेटर्स, जिन्हें इसको साइक्लोट्रॉन कहते हैं, वहां यूज करते हैं. तो चलो इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, लेकिन वैन आलन बेल्स आपने ज्योग्राफी में जरूर पढ़ी होगी. हाँ, हमारे एटमॉस्फेयर के ऊपर वाली लेयर आयनोस्फीयर में, तो आयनोस्फीयर में क्या होता है कि आयनोस्फीयर में जब हम जाते हैं तो वहां पर एक वैन आलन बेल्ट होता है. आयनोस्फीयर इसका मतलब चार्ज पार्टिकल्स, है ना? तो बहुत सारे चार्ज पार्टिकल्स जो है वहां पर अर्थ अपने आप में एक मैग्नेट है.
ये पता है ना आप लोग को। तो अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में कहीं ना कहीं ट्रैप हो जाते हैं और उन पे फोर्स लगती है, और ये किसकी वजह से होता है, यही लॉरेंस फोर्स की वजह से होता है ना। और इससे बनती है एक खूबसूरत फिनोमेनन, आप नेट पे खोज के देखना, एरोरा बोरेलिस ना, यहाँ नहीं होगा, वो नॉर्थ पोल में होता है, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, अपना नॉर्थ पोल नहीं, मैग्नेटिक नॉर्थ पोल में देखना वहां पर, और मैग्नेटिक साउथ पोल की बात करें, एंड दोनों जगह पर आपको एक खूबसूरत सा फिनोमेनन मिलता है, और वो फिनोमेनन होता है आपका एरोरा बोरेलिस। तो वो ऑस्ट्रिया में, जर्मनी में, हाँ वहां उस एरिया में आपको दिखेगा ठंड के दिनों में, बहुत ही खूबसूरत जो आयन्स होता है ना आयनोस्फीयर के, तो वो मैग्नेटिक फील्ड के, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड में आ जाते हैं, और सन का फ्लेयर्स कुछ होता है तो जिससे एनर्जी बढ़ के वो बहुत ही खूबसूरत सा पैटर्न मिलता है। जरूर ढूंढना आप लोग नेट पे और मेरे को बताना कि कैसा था, ठीक है। अब इसके बाद आती है, अभी बोलते हैं एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस, एनर्जी क्राइसिस। हाँ, चाइना और बहुत सारे scientists all over the world, they got together and they are making an artificial sun। और यहाँ पर भी हमें यही बात, यानी लॉरेंस फोर्स को यूज करके ही बनाया गया है। वो कैसे, हम किसी और क्लास में सीखेंगे। अरोरा बोरेलिस का भी यही एक पर्टिकुलर चीज जो यूज किया जाता है वो है हमारा लॉरेंस फोर्स, है ना। बहुत कुछ यूज होता है, लेकिन उसमें से एक चीज है कि ये चार्ज पार्टिकल को हमने मैग्नेटिक फील्ड में रखना है। ये सब के बारे में जो है सभी कुछ इस लॉरेंस फोर्स पर बेस्ड है, ठीक है। ओके, नाउ द थिंग इज, let me ask you a few questions, right? So how much is the force experienced by the charged particle when it is rest in the magnetic field? No force. Why? Speed is equal to 0. तो इसके लिए सबसे पहले क्या लिखना चाहिए? फोर्स। याद हो गया होगा आप लोगों को, फोर्स ऑन द चार्ज पार्टिकल दैट इज F, फॉर्मूला क्या था? Q V B sin थीटा। तो उन्होंने पूछा कि पार्टिकल रेस्ट पे होगा, तो रेस्ट पे होगा तो V कितना होगा? 0। अगर V 0 तो फोर्स भी 0। What is the force acting on a particle while it is moving along the direction of the magnetic field? बेटा इस केस में थीटा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 डिग्रीज हो जाएगा। तो 0 डिग्रीज इसका मतलब फोर्स 0। Does a neutron moving in the magnetic field experience a force? बोलो बोलो, न्यूट्रॉन पे चार्ज होता है? No, there is no charge on the neutron, so no force. Okay, negative charges moving along the x direction in the magnetic field is along the y-axis. What will be the direction the negative charge will be deflected? You have to think about it. Put your right hand rules and then say yes. Okay, so you have to go home and learn this topic. Thank you.